You know what? Let's keep the paint train rolling here. एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्यों? Back to the tool shed, L क्योंकि आइंस्टीन brackets, ने लाइट को spec एक them, पार्टिकल मान लिया था, expect एक those to be. पैकेट, एक एनर्जी का पैकेट, और पैकेट तो पार्टिकल की तरीके से If एक्ट you करता make है, it home, तो वो AX, चीज में हम XA, your money's my इंटरफेरेंस money, boss, एक्सप्लेन नहीं कर inside पाए, here, running that यहाँ पे theory. Because in the mill, if I डिफ्रैक्शन whipped out my एक्सप्लेन books नहीं right कर now, पाए, they will look identical to पोलराइजेशन this. We're एक्सप्लेन just नहीं कर letting this पाए. guy do that. I'm picking up some तो tricks and आइंस्टीन maybe some क्वांटम थ्योरी wave भी functions on कुछ फैक्ट्स timelines where एक्सप्लेन नहीं कर congruency पाए. is the stone mill, and I क्यों? might have to क्योंकि pull इसने that उसको out and remind पार्टिकल नेचर somebody, मान लिया, you're not, वेव नेचर you're मान not लिया. Carl अब इन Sagan सारी good. थ्योरीज के I बाद am. फाइनली फिफ्थ नंबर पे कंक्लूजन ये Carl निकला Sagan come up कि here, लाइट के Hawking, कुछ back बिहेवियर या to कुछ Bell's equality, प्रॉपर्टीज उसको पार्टिकल exclusionary, एज्यूम करके data एक्सप्लेन की compressed, जाती है, Hutter's और prize. कुछ We forgot प्रॉपर्टीज उसको Schrodinger वेव inside here. एज्यूम Go करके back and एक्सप्लेन hit की it जाती again on the है, whole कोई दूसरा timeline. रास्ता ही नहीं है. The ones and zeros you need इसलिए to kind of फाइनली describe अब this theory. इस Now it'll मॉडर्न give you a एज bit. में Here's the साइंटिस्ट diode, right? ऑलमोस्ट सभी This साइंटिस्ट is the इस line चीज you पे gotta एग्री jump कर it, गए Mario. This कि लाइट में जो है, लाइट में ड्यूअल नेचर है, coming down this way at the up over यानी कि वो in the tool वेव भी shed है guy. और वो पार्टिकल भी है. And that's the reality of inverting the square law. What that secret brick is, you gotta find it though. I'll give you that's where the clue is. AX. वो ड्यूअल नेचर You gotta find it. जो लाइट को दोनों टाइप के कैरेक्टर एज्यूम करके मानते हैं, दोनों टाइप के कैरेक्टर उसमें मानते हैं कि इसमें लाइट वेव का भी कैरेक्टर है, उसमें पार्टिकल का भी कैरेक्टर है. तो अब जो मॉडर्न ड्यूअल नेचर थ्योरी है उसकी हेल्प से लाइट से जितने भी आप लाइट के जितने भी फिनोमिना हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, उन सबको बहुत इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है. तो दिस इज लास्ट एंड फाइनल थ्योरी. ठीक है, इन चीज को बहुत अच्छे से आप नोट करिएगा. The only thing I'd do different here is add some blue and get the program and limit down, because that's what they did. Button toggle switch, wire, battery, breadboard spread across everywhere, hot wires, and mad pixies everywhere. सबको with मतलब एक टाइप से We ये do that? I don't फाउंडेशन do that. बनाने के काम आएगा कि हमने एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे हैं. तो इस particular Again, chapter you में know, हमें but क्या he's पढ़ना doing है? it right in the Light way that पढ़नी this है, is hot and low. क्या He assume did that करके, right, but उसको wave assume करके, the और light को the wave prime assume pattern of करके following the maximum power logic किसने to किया है? why this is Huygens this ने. using तो these अब kinds हम of things इसके is a बाद hot Huygens mess theory theory. पढ़ेंगे. It's still एक popping up in a lot of principle super अच्छे से note करिए, positions, फिर not हम known Huygens theory पे fixed, switch करते हैं. behaving themselves pixies, which gets you into that model in stone mill. Why I can make it real clean like that, given this तो type of अब orientation इसके of बाद it, हमें Huygens but not the principle पढ़ना है. hydrogen wave ठीक है, function, which देखिए, does Huygens split principle into that red, क्या होगा? white, or here he's going red, white, and ये एक yellow, theory which, well, maybe his color spectrum works just fine, but given the overall hydrogen wave function problem, even Dr. A level Huygens physics, you don't want to wave theory the binary explain way करने के लिए मुझे कुछ and terminologies or है. because prime जो पहले patterns, explain logic करनी पड़ेगी, gates, जैसे and wave or its alternating ठीक है? counterpart in a क्या matrix पढ़ to रहे हैं? flip you Huygens. over, get it through that system. That's what that brick does. Starts to break down in that alternating way again. So we're talking. We should be talking about again inverted pilots theory. Anybody else from that trajectory is going to talk about a lot of calculus classes, and that thing Huygens breaks theory open से to a whole पहले field मुझे of पता होना spectrums. चाहिए कि Well, wave there's a front क्या calc होता है. graph of it. It's a general calculator, while running rabbits, or the wolf guy got next to it in line and इस word alternated का the काफी wave use function होगा. to have different compressions and known values of देखिए, pin wave front क्या होता है? presses on the Wave front calculator that gets it to do locus boobies. है उन पॉइंट्स Turn का hydrogen into boobies. जिनकी फेज एग्जैक्टली सेम होती है. ठीक है ना? Hello, world. मान लीजिए कोई सोर्स है लाइट का, किसी सोर्स से चारों तरफ लाइट निकल रही है, या There किसी भी you तरीके are, से you किसी know. भी पैटर्न में लाइट निकल And now the रही है. waving function ठीक है? comes in, तो and उस सोर्स से निकलने वाली लाइट so he does have a पे blue one. Look at that. So, well, अगर हम if उसको you did वेव it एज्यूम right. करते हैं तो Like I said, the फेज high and low और work that way path to voltage दोनों चीजें between exist this करेंगी. line inside the ठीक है? pipes. If तो you're going to जो just जो पॉइंट सेम do फेज Feynman में, अगर diagrams हम to उन this, पॉइंट्स को मिला you दें could talk तो वो about why वेव that base फ्रंट function बन जाएगा. of the line coming ठीक है? in, यानी कि two coming लोकस, out, or two coming in, ठीक है? उन two पॉइंट्स का लोकस outs जो सेम फेज based में on एक्सिस्ट the करते हैं, उसको वेव points. फ्रंट बोलते हैं. That's आप still a चाहे diagram. They're तो connected to लिख each सकते हो other the by locus of being all in the quadrants of a particles structure. of medium. NP, air turbulence in itself, creating a compression or a state where an action, a spooky distance can pop all up. the It's a fluid. You know, it's going to move with compressible particles natures of like ones medium. and zeros, non-compressible, but being compressible in superposition. Have that vibrating line
trajectory because, well, we know it'll Flappy Birds comparatively Yeah. doing this extra stuff. Same phase. But this is not Flappy Birds except by diagrams. You know, it's coming up in a very This is called as arbitrary jump. आप That, देखिए like, wavefront I का get क्या है, that. मैं थोड़ा सा Hopefully और that explain statement कर makes देता हूँ। sense to मान you. लीजिए ये कोई But point source to है। get there, it's the same way as inverting the shadow इसमें से problem चारों to तरफ this light line निकल of देखिए, changing particle EM over from the medium के field हैं। theory because it needs to be more Medium के compelling particle में से wave nowadays, निकल के जा रही है। 2014. ठीक है ना? At तो मान least लीजिए इस what the direction demographic में, would इस represent while direction trying to में, इस describe direction some में, हर duality direction में wave of निकलेगी those उनसे। actions given ठीक है that ना? ये कोई snowflake point there. source है। Certainly going to get into several different types of calculus, but we're going to have a compression problem, a cosmetology to deal with on the eschatology of अब every मान लीजिए factor, wave निकल के यहाँ पे and ऐसे how ऐसे चल long रही you would है। have to do that. वाली So wave यहाँ you पे look at the operator ऐसे under ऐसे certain चल रही है। states and say, well, ये they वाली key wave यहाँ पे straight ऐसे line ऐसे चल रही है। तो आप under देखिए, जो models. same phase And के there's a point lot हैं, of different ones, देखो and they ये can point, act different to ये each वाला other point, when they're in ये their वाला blue point, on ऐसे state, same and phase के mad point as है। hell अगर मैं little इनको pixies just मिलाऊंगा whipping around there like a ऐसे, तो ये एक सर्कल बन जाएगा। और अगर ये पॉइंट सोर्स है तो चारों तरफ हर डायरेक्शन में वेव्स निकल रही होंगी, इसलिए एक स्फीयर बन जाएगा। तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी? एक स्फीयर। Manosphere, इस Fear स्फीयर of पे Man Prophet? एग्जिस्ट Yeah, करने well, वाला I हर heard that पॉइंट one सेम before. फेज में होगा। अगर ये वाली देखो, ये वाली पॉइंट भी आप मीट कराओ ये वाले, तो ये Well, वाले let's एक use it नेक्स्ट correctly. स्फीयर बन जाएंगे, Let's अलग से break स्फीयर this बन down जाएगा। real quick here. ठीक है ना? जितने भी इस पॉइंट यहाँ पे इस जगह Well, एग्जिस्ट करने वाली usually वेव they होगी, work in सब circuit की with each फेज other. सेम होगी, सब अपने पीक पे होंगी। तो आप देखो, इसका मतलब सेम फेज वाले पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं एक This is the दूसरे hard से, part with the तो एक computer, though, spherical structure because मिलती getting है। scale right. इसलिए What point scale are we source, dealing with? अगर पॉइंट सोर्स है, You know, तो and so point on the source का eschatology, wavefront tracking Kali here, his shadow problem banging will in on be the floor once. spherical. Kali, Buddha, one of them. Well, hydrogen. Back to what we're doing ये here एक in spherical multi-form wavefront hand Oppenheimer and Project Blue ठीक है? Book and the files you इसी can तरीके से open up बहुत with the टाइप data के compressed with wavefront होते हैं। programs. This bad सबसे puppy पहले right तो here. spherical Woo, she got some wavefront ही होता traction. है। Spherical wavefront जो main है, Oh, cylindrical back to what we're doing, we wanted Penzero up here, popping him up because it helps. cylindrical wavefront, It's a nice smooth तीसरा way to plane deal with the wavefront, mechanics. Oh, you mother! What are you doing? Spherical wavefront तो ये आपको दिख ही गया है, ठीक Don't है? do those things to me. Cylindrical 63. wavefront भी आप देख सकते हो। I thought you were my मान friend. लीजिए कोई एक cylindrical source है इस तरीके का, यूं, ठीक है? इस पे खूब सारी लाइटें You लगी हैं। behaved like my friend तो for a इसमें little क्या होगा? while. यहाँ से निकल इस लाइन से जो वेव निकलेगी वो ऐसे निकलेगी। आप एज्यूम कर सकते हो, आप देखिए इस तरीके से निकलेंगी। यूं। Where we living? यहाँ से जो भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकल रही है, तो Well, ये we वेव talked about फ्रंट Maxwell last one. इस तरीके से अगर वेव निकलेगी, तो सेम फेज के पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे तो सिलेंड्रिकल That's वेव what फ्रंट is बन important जाएगा। here. This is Raylight, Jeans, Maxwell. ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। Let's go back to that first मान लो, that first यहाँ पे ये column and एक row plane game surface of है, AX to यहाँ से wave XA, निकल रही है, flipping, changing इसमें बहुत models सारे and point हैं, using some standard यहाँ से model wave junk, निकल रही है इस तरीके से। upspin, charm top, whatever you. तो इसमें अगर हम सेम फेज वाले पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो फिर से एक प्लेन ही मिल जाएगा हमको, फिर से एक हमको प्लेन ही मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी प्लेन वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होगा? वेव फ्रंट वो सरफेस है जिस पे एग्जिस्ट करने वाला हर पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है? अब हाइगेंस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे वेव फ्रंट वर्ड यूज करना पड़ेगा, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, ठीक? अब हम अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है? हाइगेंस थ्योरी, ठीक है ना? एक्चुअल में हाइगेंस थ्योरी ने माना Pence wrote one line when he said this bad puppy's a vacuum problem. I mean. is a wave, ठीक? इस हाइगेंस थ्योरी को मैं 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना? 4 पॉइंट्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ, इस तरीके से मैं एक एक पॉइंट इसका एक्सप्लेन करूंगा। Well, if you know the game tree here. फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? देखिए फर्स्ट पॉइंट में उसने क्या बोला, आप लिख सकते हो, ईच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, Let's get this out of here and do this. point source of light is a center of
want disturbance line tammer. Well, this is a is the center of fun little game disturbance too. from which waves spread in all direction. Let's look for Tomcat, From but which waves spread in all direction. no. Well, all right. Well, we are here. ठीक है, इसने बोला है कि हर पॉइंट स्पेस में जहां पे भी लाइट एग्जिस्ट करती है वहां का हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरीके से एक्ट करता है. मतलब वो सेंटर होता है डिस्टरबेंस का. डिस्टरबेंस मतलब जहां से वेव निकल के चल रही है, इस तरीके से वेव निकल के चल रही है, उसका सेंटर है. ठीक है ना. जहां पे भी वेव फैली हुई है, जिस जगह भी लाइट फैली हुई है, उस एरिया का हर पॉइंट एक सेंटर की तरीके से एक्ट करता है डिस्टरबेंस का. ठीक है. इसलिए वेव फ्रंट, ठीक है ना, हर एक पॉइंट नए पॉइंट सोर्स की तरीके से एक्ट करता है. ठीक. इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? यानी कि अगर मैं इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, एक्चुअल में अगर यहां पे लाइट एग्जिस्ट करती है, इस एरिया में लाइट एग्जिस्ट करती है, तो यहां पे एक्ट करने वाला हर पार्टिकल, हर पॉइंट एक तरीके से नए सोर्स की तरीके से काम करता है. फिर यहां पे अगर कोई पॉइंट है तो वो अपने एक नए सोर्स की तरीके से काम करता है. ऐसे. इसलिए लाइट हर जगह दिखाई देती है, हर कोने कोने में फैली हुई दिखाई देती है, क्योंकि लाइट अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है, तो कुछ ही ऑब्जेक्ट पे गिरेगी, कुछ पे तो गिरेगी नहीं. जबकि लाइट तो अगर इस रूम में हम लाइट जला दे तो लाइट रूम का कोना कोना लाइट से, मतलब लाइट पहुंच जाती है वहां पे. उसका रीजन वही है कि लाइट जहां भी एग्जिस्ट करती है उस जगह पे चारों तरफ फैल जाती है अपने आप. यानी कि लाइट वाले एरिया का हर पॉइंट, हर पार्टिकल एक नए सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस, यानी कि नए पॉइंट I've used that one तरीके for a से while. काम करता Let's है. see what else we got. ठीक है. अब यहीं पे आप वेव फ्रंट को भी इंट्रोड्यूस कर What the hell's सकते my हो. line tamer? ठीक है. अब ये जैसे ये पॉइंट है, इसका वेव फ्रंट क्या हो गया? line tamer. स्फेरिकल. तो यहां से इस तरीके से डिस्टरबेंस जनरेट होता रहेगा. ठीक. हर पॉइंट, ये वाला पॉइंट नए डिस्टरबेंस का सेंटर है इस तरीके से. There's Tomcat. इसलिए किसी भी बॉडी पे लाइट हर डायरेक्शन से पड़ती है और कोई भी बॉडी हमें चारों तरफ से दिखाई देती है.